हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। म्यूचुअल फंड्स विद ग्रो के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अरुणिमा एंड वी बैक विद अनदर एक्साइटिंग लाइव सेशन इन आवर ग्रो हेडक्वार्टर्स ऑफिस। एंड आज का सेशन का टॉपिक इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ट्रेंडी राइट नाउ। इट्स ऑन सिल्वर इन्वेस्टिंग। आज हम समझेंगे कि सिल्वर इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है एंड इसके पीछे जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसके पीछे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एंड हिस्टोरिकली स्पीकिंग सिल्वर की पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, उसमें उसमें कोई ट्रेंड दिख रहा है कि नहीं। एंड इनफैक्ट रिसेंटली ग्रो म्यूचुअल फंड ने 2 नए स्कीम्स लॉन्च किए हैं, ग्रो सिल्वर ETF एंड ग्रो सिल्वर ETF FOF, एंड दोनों का NFO पीरियड 16th May 2025 को एंड हो रहा है। So to talk about silver investing and a lot more, we have with us Groww Mutual Fund के CEO Mr. Varun Gupta. Thanks so much for taking time out for this, Varun. Thanks for the invitation. Very happy to be back here. Yes, Yeah, excited to have yeah. this chat too. And to all the audience members, हमने NFO के details comment section पे एक pinned comment के तौर पे डाले हैं, so please check them out. And if you have any questions, we'll take up all the audience questions at the end. तो आप अपने questions ज़रूर comment section में डालिए. We're keeping an eye on that. So Varun, first off, सिल्वर इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहा है दिन भर दिन। Correct. इसके पीछे रीजंस क्या रहे हैं? Right. देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा आराम से समझते हैं। सिल्वर एज अ कैटेगरी इज नॉट यूजुअली लोग रिलेट नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट से। गोल्ड तब भी लोगों को समझ में आता है कि गोल्ड हम इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट। देखिए सिल्वर ना एक बहुत डिफरेंट टाइप का मेटल है। इट्स अ रेयर मेट, इट्स अ प्रेशियस मेटल, बट एट द सेम टाइम अनलाइक गोल्ड इट हैज़ अ वेरी लार्ज इंडस्ट्रियल यूसेज। और लेट मी पुट इट दिस वे कि इंडस्ट्रियल यूसेज ड्राइव्स अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर सिल्वर। Interesting. I used to think silver is only silver jewelry, but like industrial usage, as in what do you mean by So that? lot of things in industry, largely in the new age industry, if you talk about EVs, तो जैसे Okay. it's a very interesting thing कि हर IC जो internal combustion engine होता है उसमें 15 to 25 grams of silver use होता था. Okay. But in EV engines, about 25 to 50 grams of silver is getting used. And Oh. as EV penetration across the world is growing, right now the EV penetration I think is in double digits, higher double digits. So silver ka usage is continuously increasing. So that is one is EV. Second is renewable energy and largely the solar energy. So photovoltaic cells में silver is used very rapidly. And third is 5G के infrastructure में भी silver is used. Right, so because of this new age technology, silver का हमेशा से use था, electronics में हमेशा से use था, but because of this new usage in the new age technology, industry demand is very high. Okay. So much so that actually ये अगर हमारे पास हम अगर डेक दिखा रहे हैं उसमें आप दिखा सकते हैं कि 2020 तक about 1000 ounces of silver was produced, 1000 ounces of silver was consumed. But since then, the supply has remained consistent at about 1000 ounces a year. The demand per year has increased to about 1300 and about 1200 ounces now. It peaked Clearly, at it's spike 1300. है, right? Yeah. So this is what is basically, so that is very interesting from a silver as a metal, which mostly we will not know. So industry demand है about 60%, 58 to 60% is industry demand. 17 to 20% is jewelry demand across the globe, and 70 to 20% is also investment demand. So silver has a very high, supply demand is very favorable for silver, and that's why we believe it's a good investment opportunity right now. Along with that other things also, जैसे अगर आप सिल्वर एज अ मेटल देखें तो हिस्टोरिकली हमने अब उसके रिटर्न्स की बात करते रहे, तो इन्वेस्टर्स का सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जैक्टली मेरा हाँ क्वेश्चन वही होने मतलब दैट वाज गोना बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन या कि एक्विटीज के कंपैरिजन में या सिल्वर की परफॉर्मेंस कैसी रही है इफ यू लुक एट इट फ्रॉम या एन इन्वेस्टिंग लेंस? या तो देखिए यूजुअली सिल्वर इज वेरी इन्वर्सली कोरिलेटेड टू इक्विटी मार्केट, ओके। राइट? तो उस पर भी अगर हमारा एक स्लाइड होगा, आई थिंक वी कैन शो इट हियर। या सो स्लाइड, दिस इज स्लाइड नंबर 4. So आप देखेंगे तो correlation between silver, gold and equity. See, equity and silver are very uncorrelated, and gold and silver are very positively correlated. Right? Okay, तो मतलब they move in the same direction. Usually in the same direction, not exactly like it's not 100% correlation, but 75% type of correlation is there. Okay, got it. और अभी तक हमने देखा है कि and so what it also does very importantly, क्योंकि it's negatively correlated or not so correlated to equity, अच्छा। यूजुअली आप कभी भी ड्रॉडाउन पीरियड देखेंगे तो उसमें सिल्वर हैज ऑलवेज आउट परफॉर्म्ड इक्विटी. सो वी वेंट टिल 2000 एंड हमने वो 5 to 6 टाइम्स देखा जब देयर वर इवेंट्स एंड मेजर ड्रॉडाउन हैपेंड इन इक्विटी. सो स्टार्टिंग विद 2000 जब आईटी क्राइसिस आया था, टेक बबल मेल्टडाउन हुआ था, निफ्टी 50 वाज डाउन बाय 36%, सिल्वर वाज मोर और लेस फ्लैट, इट वाज डाउन ओनली बाय 2%. And more recently, if you look at it in 2010, 2012, silver was up by 50%. Nifty 50 was down by 14%. Right. So silver also provides a good hedge. Uh,
yes, gold is better as a safe haven, but having some proportion silver in your portfolio is also something which we advise to our customers as investment advisor. Very interestingly, silver investing is very new in India. From a financial investing perspective, it was launched only in 2022. It's not very popular. ओह Yeah, it's the वो तो ETFs काफी recent है मतलब very 3 recent. साल ही हुए तो I think the first ETF was launched in 2022. तो तब तक physically silver में लोग invest करते थे. And but since then it has grown very very rapidly. Like I think it is close to let me just check the number. I think it is close to 13,500 crore now. The total investment which has happened in silver ETF in India, and across the globe, this investment trend is only growing. So usually whenever new investment comes, the people who are more smarter HNIs वगैरह they latch onto the trend, they diversify. So this is an opportunity जो हम अपने retail investors को भी देना चाहते हैं कि you should not like depending on your risk profile, depending on आप अपने advisor से आप consult करके, you should start having some allocation in silver as a potential hedge to your portfolio, and also for long term returns. Got it. And speaking of giving investors that opportunity, right? अभी Groww Mutual Fund ने दो schemes launch किए हैं. Tell me a Correct. little bit about those. Yeah. What is the thought process उनके पीछे? Yeah, so it's basically silver ETF. First is silver ETF and next is FOF, fund of fund on top of that ETF. Okay. So London Bullion LBMA Market Association, they give silver trends. Silver का क्या pricing है? So this will track those silver pricing global, which whatever is the silver pricing. For every money which you invest, there will be a proportionate silver which will be bagged, like Okay. just like any gold ETF. So it's a very safe way of investing. It's of course there is no risk here in terms of asset ka security. At the same time, so it's basically that it's very simple actually. It will track silver prices, and it will give returns as per in correlation with whatever silver prices are happening at London Bullion Market Association. Got it. तो Okay. FOF जो है वो म्यूचुअल फंड का तरीका है उस ETF में इन्वेस्ट करने का. तो आप कई यूजर्स होते हैं जिनका डीमैट नहीं होता है, उनको ETF में इन्वेस्ट नहीं करना होता है, वो सिल्वर FOF के थ्रू सिल्वर में वो शेयर ले सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं. Got it. Understood. And ये कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है ये both these schemes? See, मैं as an advisor, I am also personal advisor to a lot of folks. मैं usually advise करता हूँ कि anyone and everyone should have some proportion dedicated to commodities. Definitely anywhere between 10 to 15%. इसमें आप गोल्ड प्लस सिल्वर का आप अलोकेशन रखिए. Gold roughly can be about 10%, silver can be about 5%. Of course, it matters a lot depending on your risk profile and आपका कितना टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का. यूजुअली इट्स ऑलवेज ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्पेशली कमोडिटीज, क्योंकि ये इक्विटी को ही हेज कर रहे हैं, राइट? तो बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि 10 to 15% इज गुड. यू शुड हैव वॉट एवर यू हैव इन सिल्वर, डबल आप उसका गोल्ड में एक्सपोजर रखिए. Okay, that's a good thumb rule. Yeah, that is usually what I follow. But again, varies across investor to investor. I would suggest they should do their own risk allocation or consult their financial advisors. Okay, got it. And I wanted to understand कि when we talk about silver investing, right? Do you think अभी ये सही moment है to experiment with something like this, or even introduce it in our portfolio? That's a very interesting question, right? And it's very important कि आप किस समय उसमें position ले रहे हैं. See, the most important thing when we look at when we think about commodities is, एक तो generally अगर आप investing कर रहे हैं तो आपको 10-15% commodities में करना चाहिए, but you also want to time. So from a timing perspective, one of the most important thing which happens is valuation, right? And when we talk about valuation of silver, हम लोग एक generally all in financial market we look at something called gold silver ratio, right? So what it means is कि कितने gram of silver is needed to buy 1 gram of gold. Okay. So historically, actually, I think we have a slide on it. Let me just fish out that slide so the team can present it as well. Yeah, this is slide number 9. Yeah, so this is you look at, and this ratio historically has always been around 60, right? About 60, 62 वो रहता है. और आप देखेंगे उसमें उसके across it always keeps hovering around. So whenever this is high, that means gold is overpriced and silver will catch up or gold will come down. But that does not happen over very quickly. Usually silver catches up. So that ratio which is hovering, which used to be about 60, 62 is right now close to 92,
right? So it's significantly, gold is very overpriced right now. So generally हमको दिख रहा है कि valuations are decent for silver, and the other macro trends in terms of which we discussed before कि supply is very low, or supply has remained consistent over a period of time. Supply has not changed, but the demand is very high because the usage in newest technologies is very, जैसे आप slide number 7 दिखा सकते हैं अगर जो भी है कि earlier it was part of electronics, automobiles, but now the new era of silver usage, especially in EV, 5G, green energy, is very high. और उसके कारण demand has increased. So this macro factor combined with what is happening, the the valuation rationale, we believe that silver provides a good opportunity, and that's why we have launched it for investors अभी. ओह काफी इंटरेस्टिंग मैट्रिक है, तो पहली बार सुना है मैंने गोल्ड टू सिल्वर रेशियो. Yeah, ओके. yeah. एंड सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन. Sure. सो फर्स्ट पर्सन हुज आस्क्ड इज जीएस थॉट पॉइंट नाम का एक हैंडल है. क्या सिल्वर प्राइसेस अभी भी अंडरवैल्यूड है गोल्ड के कंपैरिजन में? या सो जैसा मैंने आपको बताया, हमने we have looked at the gold silver ratio. So gold is very 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 costly now. Gold has really shot up, like 1 year returns I think are 20% plus now. Correct. It has been growing month on month. So this is gold while provides, but तो हमारा अभी पोजीशन ये है कि गोल्ड पे आप होल्ड कर सकते हैं. गोल्ड इज नॉट from our as an AMC perspective, gold is not a buy, gold is not a sell, gold is a hold, but silver is definitely a buy. Right, because the gold silver ratio is very very high right now. Gold is overvalued versus silver. So silver, there is a potential that silver prices might catch up to gold, and that's why silver provides a better opportunity to invest, purely from a commodity perspective. Okay. So again, I would like to add this again. 10 to 15% मैक्सिमम आपका कमोडिटीज में एक्सपोजर होना चाहिए. Right. जो भी आप सिल्वर में इन्वेस्ट करें उसका डबल आपका गोल्ड में होना चाहिए. And after this has met, then you can think about taking an exposure in silver. Again, varies from customer to customer, varies from investor to investor, varies as per your risk profile, varies as per your duration at which you are looking at. So please consult your financial advisor and only then take a call. Understood. Got it. Next question is from Radha Rajput, जिसने पूछा है कि सीजनैलिटी का सिल्वर प्राइसेस पे क्या इफेक्ट होता है? काफी. तो देखिए, सिल्वर इज वन ऑफ द, सो गोल्ड, लाइक लेट्स कंपेयर इट टू गोल्ड, राइट? सिल्वर इज वेरी वॉलेटाइल, राइट? तो सिल्वर में क्योंकि काफी सारी चीजें फैक्टर में ऐसी, गोल्ड इज जनरली सेफ हेवन, उसमें सेंट्रल बैंक का बाइंग, बुलियन, वीकनिंग डॉलर वगैरह, ऑल ऑफ दोस थिंग्स कम्स इनटू प्ले, एंड यूजुअली द प्राइसेस इज quite easy to predict, right? Price movement जो होगा. But silver behave like a true commodity, right? While the demand is very high, but there is an always, historically we have seen that it's quite volatile. So it's always better to not time in silver. Yeah, right now is the right time. So you can take a position, but you don't take a position for 1 month, 3 months. Take a position for long term, Okay. right? Make it a part of your long term portfolio as a hedge of hedge against the inflation. Hedge against the equity down risk, and as from a long term return generation perspective. So don't try to time. It's a very volatile kind of instrument. Long term is the key, I guess. Yeah. ठीक है. राहुल सिंह ने पूछा है क्या फिजिकल सिल्वर शॉर्टेज भी प्राइसेस बढ़ा रहा है? Interesting question. See, there is physical silver shortage है या नहीं, I don't know. We usually look at overall demand. Industrial demand is definitely increasing. It has gone through the roof. I think I have those numbers. Industrial demand used to be close to since 2001, annual supply is 1,000 million and demand for silver is 13 million, right? And currently the demand is 1,200. So industrial demand has also increased, largely driven by industry. Physical demand is more or less same. It has not drastically changed. Jewelry for silver has not increased as much. So it's not, I would not say कि physical jewelry का physical silver का shortage है, but is general, I think, is the industrial demand which is driving the the gap between the supply and demand for silver. Yeah. Okay, got it. That's an important distinction. Yeah. पारिक पवार ने पूछा है क्या फेड रेट डिसीजंस का इक्विटी और सिल्वर दोनों पे सेम इम्पैक्ट होता है? So largely gold पे होता है impact because gold is considered as a safe haven. Inflation hedge. तो जो पैसा जैसे अभी डॉलर के अगेंस्ट बहुत स्ट्रेस चल रहा है, right? So a lot of money which used to go in T-bills is now going in gold, right? जो डॉलर्स में जाता था T-bills, अमेरिकन US T-bills, वो अभी गोल्ड में जा रहा है. तो उसके कारण गोल्ड प्राइसेस हैव आल्सो इंक्रीज. सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग बिकॉज वो लोग भी डॉलर्स पहले लेते थे, इंस्टेड ऑफ बाइंग डॉलर्स दे आर बाइंग गोल्ड. नाउ silver and gold
usually हमने देखा है from a return perspective are proportional to each other. Okay. So while the direct correlation नहीं होगा इसका, but the indirect correlation happens, the silver also starts increasing. Generally, silver is also considered a safe haven, not as much as gold, but it is volatile, because industry demands drive a lot of its, prices. So while it will not have a direct correlation, it has an indirect correlation. Yeah. ठीक है. And next question from Raja Kumar is, silver mining cost और profitability का prices पे क्या impact होता है? So sorry, you can say it again. Silver mining cost और profitability के prices पे क्या impact होता है? Silver mining cost or profitability. Silver mining cost और profitability के prices पे क्या impact होता है? Silver prices पे, I think. See, silver mining has remained same over a period of time. See, more importantly, let me put it this way, right? So this is a industry, very interesting thing which we actually, were researching, right? कि silver का अगर आपका demand है, one second, I'll just open that note of mine. So silver का आपका X demand है, right? There is 1200, X supply which is 1000 ton. What if this supply increases drastically? Okay. Right? Let me answer that question in a different way. ठीक है. तो अगर सप्लाई बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा, क्या सिल्वर के प्राइसेस गिर जाएंगे? तो वो क्वेश्चन हम आंसर करना चाहते थे, और उसके लिए हमने कई देखा कि देखो सिल्वर जो माइनिंग है, इट्स यूजुअली कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट? इट्स मेक्सिको, पेरू, चाइना, चिले एंड रशिया. And any issue which happens in this country definitely impacts the silver prices, right? And that is one part of which adds to the volatility of silver. But more importantly, अगर क्या होता है कि सिल्वर का जो माइनिंग होता है, अच्छा, नाउ कमिंग टू द माइनिंग पॉइंट, silver now is rarely mined on its own, right? So silver is mined along with other metals, right? Other precious metals, which are more used in day to day, like copper, lead, and zinc. And while the technology is improving, but silver का it's not like standalone mining नहीं होता है. Okay, ये isolation में नहीं होते हैं, साथ Isolation में में बहुत होता सारे है. metals साथ में होते हैं. Correct. Got it. And also silver का exploration and development timelines are very long, right? 7 to 10 years it takes to figure out where you can mine silver and you can start developing. So we believe right now जो भी silver के prices हैं, at least they are not directly proportional कि आपका supply, और not directly proportional कि mining में बहुत तेजी से कुछ होता है, या कुछ नया आपको discovery हो जाता है silver का. So that is what our understanding is right now. And coming back to the question कि cost से mining का क्या है, I don't think it's very relevant from a silver का pricing perspective. Understood. तो मतलब supply shock जिसे कहते हैं, वो उसके chances होने कम है. ठीक है. फिर सूरज यादव ने पूछा है, सिल्वर के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से क्या लिंक है? So silver is a macroeconomic indicator of its own. Silver के pricing क्या चल रहा है, right? So gold के pricing चल रहे हैं, तो जैसे आपके जैसे interest rate cut हुआ आपका, money is moving towards safe haven. There is a lot of volatility. There is wars happening. There is India-Pakistan war happening. There is US tariff war which is happening with China. So that is when money starts moving to safe haven, which is gold, and then silver kind of follows gold. So those kind of things happens more, from a global perspective, and that is kind of a fundamental indicator of its own. Got it. Yeah. Okay. विलास कुमार ने पूछा है, सिल्वर में ग्लोबल डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस क्या दिख रहा है? आई थिंक वही जो स्लाइड आपने दिखाया था पहले. We'll discuss it again. You can go to slide number 4, I think, right? हाँ. No, slide number 6. Yeah, so देखिए again, supply of silver is limited, has been consistent at about 1000 ounces. We have been seeing this from last 9-10 years. While the demand is continuously increasing, largely because of the industrial usage and because of the usage in the new age technology, largely 5G, आपका EVs and your renewable energy driven by solar and the photovoltaic cells. And because of that, there is a gap between supply and demand. 1000 ounces पे आपका supply है, but demand is like 1200-1300 ounces. That's why the prices को हमको जो increase दिख रहा है, वो is one of the reasons is basically this. Got it. And that's why suddenly वो spike हुआ था. Yeah, so से आप अगर सिल्वर का देखें तो सिल्वर में सडनली स्पाइक नहीं हुआ था. सिल्वर बहुत वॉलेटिलिटी के साथ, आई थिंक सिल्वर हैज गिवन अबाउट 15% रिटर्न इन द लास्ट 1 year. लेट मी जस्ट कंफर्म दिस. या सॉरी, 1 second.
Yeah, so अगर हम 1 year returns देखें, so about 14% return, but with a lot of volatility, I which you can can see, see. right? Correct. Yeah, so in 3 years it is 56%, but a lot of volatility. So Correct. that's why it's not, and see, wherever there is volatility, you can't really time, right? Because Hmm. here the volatility is very difficult to understand. Like gold में बहुत clear है कि कब एकदम demand spike होता है. So you can before 2-3 months you will know कि अच्छा gold की rally आ सकती है. Gaurav, हाँ. Silver में it's largely driven by the supply demand from a macro perspective and its valuation, relative valuation to gold, with a Gold, gold correct. silver ratio. तो उससे दो चीज़ों से हम लोग देखते हैं और हमको दिख रहा है कि अभी सिल्वर में is a good potential to grow, definitely from a potentially from a long term Potentially. perspective. So don't invest for short term, only invest for long term. Sure. राम कुमार ने पूछा है, क्या स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग सिल्वर के शॉर्ट टर्म मूव्स को ड्राइव कर सकता है? What do you think? See, trading सभी जगह होता है and usually trading is not to drive the prices of a stock. Trading follows the prices, right? It's not that कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया illiquid stocks में हो सकता है कि आपने बहुत ट्रेड किया तो प्राइसेस जाते हैं पर सिल्वर इज़ वेरी वेरी लिक्विड, राइट? सिल्वर का बहुत इट्स लाइक अ कमोडिटीज ट्रेडेड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो आई डाउट इट. I am not the best person to talk about it because we are long-term investors, we are not traders. But if you ask me personally, मुझे I will be very doubtful कि सिर्फ ट्रेडिंग के कारण सिल्वर के प्राइसेस में ऊपर नीचे हो रहा है. Okay. Yeah, just because of the liquidity of the instrument. Got it. जीतू सिंह ने पूछा है कि बेयर मार्केट के दौरान सिल्वर ने क्या ट्रेंड दिखाया है? Yeah, so see this is very interesting and इस पे मैं काफ़ी हार्प करना चाहता हूँ. आप आई थिंक स्लाइड नंबर 4 में हम लोग जा सकते हैं. तो यूजुअली सिल्वर, गोल्ड, दिस काइंड ऑफ कमोडिटीज आर वेरी वेरी गुड टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग द बेयर मार्केट, राइट? क्योंकि बेयर मार्केट में इक्विटी आपका बहुत डाउनफॉल जाता है तो आपका पोर्टफोलियो विल स्टार्ट शोइंग 20% 30% काइंड ऑफ नेगेटिव. बट इफ यू हैव अ डिसेंट हेज इन योर पोर्टफोलियो then you will be sorted in a way, right? And that is the way investment has to happen, right? अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, म्यूचुअल फंड्स आर अबाउट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन. लॉन्ग टर्म वेल्थ आपको क्रिएट करना है तो आपको डाइवर्सिफाई करके ही वो वेल्थ क्रिएट करना है ताकि आपके शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इज यू आर एबल टू मैनेज. तो अगर स्लाइड 4 में आप देखें तो हमने 5 टाइम पीरियड्स देखा, राइट? ड्यूरिंग द आईटी टेक बबल मेल्टडाउन इन 2000 to 2003, निफ्टी 50 was down by 37%, silver only down by almost flat, right? All 3% down. Same during the subprime crisis, Nifty 50 down by 50%, but silver was up by 12%. 10 to 12 Eurozone debt crisis, Nifty 50 down by 14%, but silver up by 50%. Right? And so on and so forth. During COVID, right? COVID-19, Nifty 50 was down by 26%. Silver was also down, but relatively significantly lesser. Cushioned impact था. Cushioned impact, correct. So this is what we believe. Silver has over and over again proven that it's a good hedge. So that's why purely from a diversification perspective, I think most investors should have some exposure to silver in their portfolio. Got it. It's a good portfolio strategy. See, generally मैं बात करता हूँ, wealth creation is not about picking the best mutual funds or not about picking the best stocks. That is of course there, but it's more about persistence, more about discipline, and also about very clearly about diversification. Right. In fact, I was speaking to Ms. Monica Alan for a podcast that we shot, Money Talks with Groww, and usme she talked about how when there's a thali, there has to be achar in that thali too. It will be a small percentage of the total thali, lekin it just adds to the flavor, right? So I was just thinking of that analogy while you were saying 10%ish. Then we have Rahul Sharma who's asked, डॉलर के वीक होने से सिल्वर प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं? देखिए सेम दिस इज द सेम थिंग कि देखिए डॉलर जब भी वीक होता है तो यूजुअली क्या होता है, डॉलर डिमांड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब, राइट? क्योंकि डॉलर इज कंसिडर्ड टू बी और टी बिल्स इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टमेंट्स. तो कई सेंट्रल बैंक्स अपने डॉलर रिजर्व की हम लोग बात करते हैं तो डॉलर रिजर्व बढ़ाते रहते हैं. अभी क्या हुआ है कि यूएस के टैरिफ लगाने से थोड़ा डिस्टेबलाइजेशन हो गया था, थोड़ा कंसर्न्स थे कि हाउ इज द न्यू गवर्नमेंट इन यूएस वो कैसे व्यू कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं. सो लॉट ऑफ बैंक्स, लॉट ऑफ द sovereign funds, they rather than investing in dollar or T-bills, they started investing in gold, right? Which is more safe haven, right? जिसका it's proven कि उसका कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, right? It's like कि पैसा अगर वहाँ पे है तो it's safe. Capital risk is from a long period perspective is lesser. So that's why gold prices started increasing, and we have seen कि gold is 75%
correlated Correlated. to silver prices. So that's why we are hoping that silver prices will also increasing. So we don't see a direct impact. It will not be like कि silver is also safe haven. While we can say that silver में भी थोड़ा बहुत diversify करते हैं, but not directly. But silver, because it follows gold, that's why we have generally seen कि अगर dollar weaken हो रहा है, gold prices increases and the silver prices also increases. Got it. Understood. Um, someone's asked कि टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन से सिल्वर की लॉन्ग टर्म यूटिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन? से देखिए, टेक्नोलॉजी, अगर हम कोई भी न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, राइट, जो भी हमारे वर्ल्ड में पॉपुलर हो रही है, जैसे अगर आप हमारे सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, राइट, सो फॉर अस renewable energy is a very very big area for focus from Indian government, right? And I think there is a target of taking the increase in energy from renewable, from solar, from about 250 to 500 gigawatts is the target. I can verify the numbers and exactly say, but I am sure of EV that they want to take by 2030. They want to take the EV percentage as a share of the overall cars or overall automobiles in India to 30%. And silver has a very important role to play there, right? Silver, IC internal combustion engines में only 15 to 25 grams of silver is used. In EV, it's double. In every EV uses about 25 to 50 grams of silver, right? It plays a very important role in photovoltaic cells. It plays a very important role in 5G infrastructure, right? And other things also we have written. It has some biopharma usage also. While we have not focused a lot more on that, but these are the newest technologies, right? तो इन सब में मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन में सिल्वर इज एक्चुअली एट द फोर फ्रंट फ्रॉम अ कमोडिटी पर्सपेक्टिव, कि जहाँ जहाँ भी बड़े चेंजेस हो रहे हैं, सिल्वर डिमांड इज बीइंग और सिल्वर इज बीइंग यूज. दैट्स व्हाई आई एम वेरी पॉजिटिव कि नेक्स्ट 5 to 10 years silver can do very very well from an investment perspective. Got it. Next question is from Sunny, who's asked, क्या सिल्वर और नास्डैक के बीच में कोई इनवर्स रिलेशनशिप है? Very very difficult to say. While it's interesting, we can draw, but I don't think so. Doesn't come very organically. I don't think so. Nasdaq is a technology index. Silver is a more of a commodity, commodity instrument. So I doubt there is any. But we can, there are definitely, we can run models and see if there is any. But I doubt. Chalo. How about we give this homework to the audience? Send us the regression analysis. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हर्षित. सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज का सिल्वर के प्राइसेस पे क्या असर पड़ता है? I think similar to the Fed वाला conversation. Yeah, but policies, see, देखिए, policies are not usually about silver, right? Policies are about कि हमको रेपो रेट क्या रखना है, इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, हमारा डॉलर रिजर्व हम कितना रखेंगे, गोल्ड रिजर्व हम कितना रखेंगे. So silver prices are rarely dependent on what is the central bank buying, or it's mostly about industrial demand and also about gold to silver ratio, right? कि gold के prices अगर increase हो रहे हैं तो silver also follows suit. So these are the two things which we see more correlation with. Okay. Then अक्षय ने पूछा कि क्या सिल्वर इन्फ्लेशन हेज होने के साथ डिफ्लेशन हेज भी है? See, it's a deflation hedge. Yeah, this is meta stuff now. Yeah. See, it's what does it mean, deflation hedge? Inflation, so definitely, it's see, if you talk about silver hedge, it's a hedge against equity. That is what I can very confidently say, right? अगर आपका equity portfolio है 80%, 85% आपका equity portfolio है, तो 15% आपको commodities में और थोड़ा आप debt, G-Secs वगैरह में भी आप रख सकते हैं. That is where your portfolio will be hedged. That I can tell you with guarantee. And also long-term returns भी हम देख सकते हैं. Actually, that's a good question. If you look at it from long term, I think we might have it in deck. Yeah, we have it. Slide number 10. So silver has performed from an out. So short term में hedge Nifty 50 के against silver ने हमेशा दिया है, जैसा हमने कई बार देखा. But long term में also returns are very comparable. So 1 year return for silver is 10%, while Nifty 50 is only 0.16 right now. 3 years is very similar. 5 years is also very similar. 10 years is similar. 15 years में थोड़ा gap आ जाता है, right? So from a long term perspective also silver has done very well from a versus Nifty 50. So it's good to have in your portfolio, because जब भी drawdown आएगा, जब risk बढ़ेगा, then silver can provide you a good hedge against the equity risk. Got it. Yeah.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम देवेश जिसने पूछा है ज्वेलरी वर्सेस इन्वेस्टमेंट वर्सेस इंडस्ट्रियल डिमांड में क्या ब्रेकअप है. आई थिंक Ha, दिस we have स्पीक्स. this. So see, jewelry is close to slide number 7. So industrial demand is close to 60%. Physical investment and jewelry are very similar, close to 17% each. Okay. And others is about 77%, right? So demand for physical investment is increasing. Demand for industrial usage is increasing day by day. Jewelry is more or less at the same levels, in terms number of tons जितना usage होता है. So that's what is driving supply for or demand for डिमांड. silver. Yeah. ओके. नारायण हैज आस्क्ड कि क्या सिल्वर में ग्लोबल रेगुलेशन टाइट होने वाला है. No idea. See, we can't predict that कि global regulation कैसे tight होगा. It's a commodity, so not really sure. It depends a lot. जैसे हमने geopolitical tensions का बात कर रहा था थोड़ा. There are 5 key countries जहाँ पे production होता है, right? I will repeat that. It's Russia, China, just आई opening थिंक that. मेक्सिको, सम या लैटिन अमेरिकन मैक्सिकन कंट्रीज पेरू आल्सो. पेरू चिले तो इन सब में कंट्रीज में होता है और जियो पोलिटिकल अगर टेंशन आते हैं तो देन इट कैन हैव सम रेगुलेटरी शिफ्ट्स इन फॉर सिल्वर राइट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल 2023-24 में मैक्सिकन गवर्नमेंट पास्ड some reform to title control over their natural resources right and because of that there was some uncertainty about future silver production उसका कैसे use रहेगा so short term में this can keep happening but because the demand is so high and we live in a capitalist world whether we like it or not right राइट. money which drives the economy money which drives more decision making for most of the countries so राइट. usually these are like short term blockers so I think this will get sorted out even if it happens गॉट इट. yeah नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम गौरव जिसने पूछा है कि ईटीएफ के एनएवी और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है. ETF NAV is the market price. ओके. Maybe he's talking about something called INAV, which people are not very familiar with. हाँ, मे बी यू कैन एक्सप्लेन हाँ द सो लाइन. INAV एक होता है जो AMC अपने वेबसाइट पे डिक्लेयर करती है ऑफ द ETF एंड देन देयर इज अ मार्केट प्राइस एट विच द ETF इज ट्रेडेड इन द मार्केट. ठीक है. सो यूजुअली INAV और ETF के बीच में जो भी गैप होता है उसको ट्रैकिंग एरर बोला जाता है और वो ट्रैकिंग एरर को मिनिमाइज करने का एक AMC का एम होता है. हम लोग उस ट्रैकिंग एरर को बहुत डिलीजेंटली मॉनिटर करते हैं एंड वी आर वेरी प्राउड टू से कि हमारे कुछ फंड्स हैं जैसे TMI इंडेक्स फंड्स की बात कर रहा हूँ विच इज़ वन ऑफ द लीस्ट ट्रैकिंग एरर इन द इंडस्ट्री एंड ETFs में भी हमारा काफ़ी लो ट्रैकिंग एरर है. मार्केट प्राइस जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर. INAV इज एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उस ETF के उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स में NAV की वैल्यू क्या है एट दैट पॉइंट इन टाइम. So it's very interesting for a very smart ETF investor. You can go to the AMC website, see कि INAV क्या है और ETF का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और जब दोनों के बीच में गैप कम हो तब आप उस ETF में बाय कर सकते हैं if you want to really really time it. Okay. Yeah. Wow, this is a bonus tip. Okay, next question is from अमन जिसने पूछा कि अगर ETF डिमांड सर्च करे तो क्या फिजिकल सिल्वर शॉर्टेज हो सकता है. आई डाउट इट. देखिए अभी भी इन्वेस्टमेंट इज इंडिया के ETF में इन्वेस्टमेंट आई थिंक इज व्हाट 13,500 राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yeah. ETF were launched in Jan 2022. 3 years, the AUM is close to 13,500 crores. Globally, it's about 1,100 million ounces, right? Which is about one year of silver supply. So yes, theoretically yes, कि अगर डिमांड बहुत हाई है जैसे मान लीजिए अभी 1,100 मिलियन आउंसेस डबल से 2,200 आउंसेस बाय नेक्स्ट ईयर इतना डिमांड आपका एक बार में आ गया तो देन द इंटायर सप्लाई विल गो इनटू दैट डिमांड बट मोस्ट लाइकली दैट विल नॉट हैपन because the prices will keep on shooting, right? Supply demand, like basic rule of economics, supply demand will catch up. Yeah. So demand can be very high, but unless supply is there, the prices can only go so much, right? Or prices will become crazy that demand will fall down, right? So this potentially will not happen so much so, but organically it can keep on increasing because there is a gap between supply and demand, right? Got So it. organically prices can keep on increasing. Okay, got it. Yeah. अविनाश has asked कि सिल्वर का वॉलिटिलिटी गोल्ड से ज़्यादा क्यों होता है. देखिए गोल्ड ना बहुत काफ़ी स्टेबल इंस्ट्रूमेंट टाइप से है क्योंकि गोल्ड के जो डिमांड और सप्लाई डिमांड का जो कर्व है दैट्स क्वाइट प्रिडिक्टेबल कि कभी भी अगर रिस्क आता है मार्केट में जैसे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम कोविड टाइम्स स्टार्टिंग देन द यूक्रेन रशिया वॉर then Iran and sorry
Israel and Gaza conflict, Israel conflict in the Gaza, then Indo-Pak war, right? And we are living in a world of lot of uncertainties. Whenever uncertainty is there, money moves towards safer assets. Those safer assets tha US dollars. Now, because there is uncertainty in that also, because of lot of tariffs and other things, the money started moving to gold, and because of the demand. Even if you look at the history, right? अगर आप World War के time पे भी जाएंगे, Yeah. then Bretton Woods instruments came up and gold as a bullion was becoming popular. Yeah, very interesting. I would like to read about it. Yeah, I'm going back to my 10th class history books now. But yeah, exactly. Uncertainty and फिर gold का dependence is, you know, there is some positive correlation. Yeah, very high correlation. तो बहुत गोल्ड का ना जो ड्राइवर्स होते हैं बहुत क्लियर होते हैं, कई समय पहले ही पता होता है. पर गोल्ड में आपको 10% टाइप्स 8 to 10% डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, योर आपके एडवाइजर का रिकमेंडेशन, उसके हिसाब से आप उसमें एक्सपोजर रख सकते हैं. सिल्वर इज अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज देयर इज वन अनदर एलिमेंट विच इज इंडस्ट्री डिमांड. And industry demand, depending on the demand, can keep on it's a little volatile. There is also investment need, so it's not as easily predictable. And commodities, we know, is a very cyclical play, right? So usually you have to see long term, yes, silver is performing good. You have to see, yes, it's a hedge against your equity portfolio. Yes, it's correlated to gold. And because the gold prices have increased, there is a potential that silver prices can also increase. And that's why overall it makes a very good investment opportunity right now. Got it. Next question is from Jagat Niranjan. Very lot of questions, right? Yeah, lots of questions. Very interesting investment opportunity काफी for users. nuanced conversation बन गया है. Thanks for your questions. Historically, जब gold silver ratio high होता है तो silver outperform करता है क्या? हाँ, तो दोनों हमने देखा है कि यूजुअली अगर आप उस डेक पे ही वापस जाए, राइट, तो देखिए ये है गोल्ड सिल्वर रेशियो. वी आर ऑन पेज नंबर 9 एंड अक्रॉस एनी टाइम यू सी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो हैज कम अप over a period of time. Gold silver ratio has stabilized at around 60, right? आप किसी भी टाइम पीरियड में देखें, बट दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ टू थिंग्स कि गोल्ड के प्राइसेस भी डाउनवर्ड ट्रेंड में गए हैं या फिर सिल्वर के प्राइसेस हैव इंक्रीज. तो यूजुअली बिकॉज द गोल्ड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग विद टाइम, and from a long term, all of us are sure, right, that gold prices will keep on increasing. So silver will follow that trend. That is what we are basically hoping. In short term, yes, there can be volatility in silver. No one is doubting it. That's why don't invest for short term. Don't try to time कि अच्छा 2-3% या 4% बना के I will exit. Only invest in silver from a portfolio diversification perspective and सिर्फ long term के लिए invest करिए. Got it. Understood. Lakshit has asked, equity crash के बाद क्या silver prices में jump आता है? Yes, ये हमने कई बार देखा है. इक्विटी क्रैश के बाद नहीं, ऐसा बोलना सही नहीं रहेगा. हमने देखा है कि उस टाइम पीरियड में अगर हम कोरिलेशन देखें तो आई थिंक वी हैव वन मोर स्लाइड ऑन दैट, राइट? स्लाइड नंबर 4. आई थिंक ये स्लाइड हमने सबसे ज़्यादा डिस्कस किया है इसमें, राइट? तो इक्विटी और सिल्वर काफ़ी अनकोरिलेटेड है. उनके रिटर्न्स में लास्ट 25 ईयर्स में हमने देखा तो देयर इज ओनली 0.08 टाइप ऑफ कोरिलेशन, 8% टाइप ऑफ कोरिलेशन. और जितने भी टाइम पीरियड्स में हमने देखा जिसमें इक्विटी हैज़ हैड अ मैसिव ड्रॉडाउन, silver has overperformed, right? Especially, or like gone down, but not as much as Nifty 50, which has happened during the COVID time. So we believe it's a good equity. It hedges well against your equity portfolio. तो इसलिए आप सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं. Got it. And final question is from Manisha, who's asked, portfolio में equity और silver का ideal ratio क्या होना चाहिए? See again, it's a very good question to end it with actually. देखिए बहुत मैं कैविएट के साथ शुरू करूँगा. प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि हर किसी का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, हर किसी का ड्यूरेशन अलग होता है, हर किसी का गोल्स अलग होते हैं. तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स ही आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं. इफ़ यू आस्क मी एज अ रूल ऑफ थम व्हाट आई लाइक टू फॉलो पर्सनली फॉर माई सेल्फ, कि मैं जितना गोल्ड में जितना सिल्वर में इन्वेस्ट करता हूँ उसका डबल गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ एज अ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी. Generally, for myself, I keep 5% in silver and 10% in gold. So overall commodities is 15% of my portfolio.
Got it. On that note, thank you so much for your time, Varun. This was extremely helpful, and I'm sure audience के भी सारे जवाब उनको मिल गए हैं. To the audience, this one final reminder that the NFO period of both Groww Silver ETF and Groww Silver ETF FOF ends on 16th May 2025. NFO details आपको comment section में मिल जाएंगे using the link. And thank you once again, Varun, for your time. And before investing, please consult a financial advisor, जिसे वरुण ने कहा. Thank you, Arunima. Thank you, everyone.